कर हरि नाम लेने से, महामंत्र का जाप करने से, moreover, when we chant the holy names together, संसार नाशन, इस संसार में हम जब फंसे हुए हैं, बार so बार जन्म मृत्यु के चक्र में हम लगे हुए हैं, the तो ये repeated cycle of birth and death चक्र से मुक्त in this material world, we will be relieved of this महामंत्र का जाप करने cycle, से चित्त शुद्धि, हमारा चित्त, and it cleanses our heart. देखिए मन शुद्ध होना Chit बहुत अच्छी बात है, Shuddhi. हृदय शुद्ध होना बहुत अच्छी बात है, बुद्धि शुद्ध होना It's good बहुत अच्छी to बात है, लेकिन इन have a सबसे clean अच्छी बात है heart and चित्त mind, शुद्ध होना, but the most क्योंकि ये चित्त important जो है is to मन have बुद्धि a अहंकार के संस्कार है, pure जो अनेकों Chitta, जन्मों से which comprises अनेकों of प्रकार के बुरे mind, संस्कार लेकर हम जी रहे हैं, उसे चित्त कहते हैं। ego, तो हरि नाम के द्वारा, इस महामंत्र के जाप and से heart. चित्त की Man, शुद्धि Buddhi, होती है, Ahankar. और So सब this भक्ति साधन chanting cleanses our भक्ति के जितने भी chit. साधन है, उन सारे साधनों का ओपनिंग, उन सारे साधनों का उद्गम जो है श्री हरि नाम से होता है। And by chanting of the holy names, the starting of the pure devotional service towards the Lord starts. So the base or the fundamental is to chant the holy names in association of devotees. निरंतर लेते रहे, निरंतर हरि नाम महामंत्र का जाप करते रहे, तो He कृष्ण adds प्रेम further that उद्गम, if we भगवान श्री कृष्ण के प्रति constantly प्रेम chant प्रकट the holy names in association of the devotees, then और उस अवस्था में our प्रेम रूपी love towards the महामंत्र God will स्वतः करेंगे, manifest, और जब कृष्ण प्रेम and we will be महामंत्र able को to प्रेम enjoy पूर्वक the आस्वादन nectar करेंगे, of तो Krishna कृष्ण Prema or प्राप्ति pure अवश्य love होगी, towards the Lord, हमें कृष्ण को प्राप्त and होना है। automatically we will get Krishna. जब प्रेम उत्पन्न होगा, हरि नाम जप When करते there करते is करते love जब प्रेम by उत्पन्न constant होगा, chanting of the holy तो names, भगवान हमारी प्राप्ति करेंगे, वो स्वयं हमसे मिलेंगे। automatically the Lord will हरि seek नाम जप us. से, महामंत्र से, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का नाम Sometimes people लेना say उत्तम है that कि भगवान की सेवा करना उत्तम है। is it better to chant the holy लोग names सुबह जल्दी or जगकर भगवत is it सेवा में लगते better हैं, to बहुत अच्छी बात है, do the devotional service लेकिन towards the हमारा Lord? गौड़ीय सिद्धांत कहता है कि ये But according to the Gaudiya और philosophy, कलयुग में in the Kali Yuga, हरि नाम ही मुख्य है, इसलिए the हरि नाम को basic is प्रधानता देना chanting of the पड़ता है। holy names, हम and जितना we अच्छे should से give हरि नाम preference करेंगे, to उतनी the अच्छे chanting of से the हम holy सेवा names. कर पाएंगे। सेवा नहीं छोड़नी है, The more लड्डू गोपाल की सेवा करें, properly we do ठाकुर जी the की सेवा करें, chanting लेकिन of सिद्धांत क्या है? the holy names, हम then अच्छे से अच्छी automatically सेवा our कब pure कर devotional पाएंगे? service towards the जब हम Lord हरि will नाम का जाप करेंगे, automatically take जब हम महामंत्र का place. जाप करेंगे। इसलिए अंतिम लाइन में कहते हैं कि सेवा अमृत समुद्रे मज्जन, सेवा रूपी अमृत के समुद्र में बिल्कुल गोता खाएंगे, गोता मारेंगे, आनंद So मग्न हो। we will be ecstatic in our devotional service towards the Lord if we chant the names properly. सेवा करो या You हरि भक्तों की try सेवा one time, करो, you आपका start मन doing the service of the बहुत Lord बदलेगा। or the service of the लेकिन हरि नाम devotees. जाप करने के बाद जब But मन बुद्धि प्योर if हो you जाता है, chant the holy names, फिर जब when दूसरा your भजन mind, उसमें body, and प्रारंभ intellect is होता है, in तो control, फिर then अभिषेक when you होता है, perform the फिर devotional भक्ति service, होती है। you will feel a different तो इस type of प्रकार ecstasy. हमारे वेदों में, शास्त्रों में, विशेष करके So, our Vedas श्रीमद् and the भागवताम scriptures, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की especially सुंदर महिमा the हमारे बीच में प्रस्तुत की है। this glorification कई was बार presented ऐसा by होता है Chaitanya कि Mahaprabhu. हम हरि नाम 16 माला जाप करते हैं So sometimes और it 16 happens so माला that जाप करने में we क्या chant the होता है? 16 rounds of
और सुबह 2 बजे chanting में माला ना and हुई तो फिर दिन भर it खींचते रहते हैं, दिन भर। तो फिर मतलब it takes प्रश्न 2 उठता है hours, कि but if somehow we are not able to finish 2 hours the chanting in 2 hours, then throughout the day we stretch it. And then there is a महामंत्र का question जाप that करते हो when, if we तो ये कोई chant so कठिन much, then करने की when will जरूरत we नहीं है, read the क्योंकि Vedas and सारे the वेद scripture, शास्त्रों etc.? का एसेंस, कंक्लूजन, सार So तो हरि नाम the है। conclusion अब आपने and the सारा essence पढ़ of दिया, all अब the हरि नाम को Vedas तुम्हें is जाने की chanting the जरूरत holy ही names. नहीं है। So once you have the अब conclusion and सुनिए essence, स्कंद then पुराण what को। is the need to go further into Vedas? That is why Skanda Puran mentions मारुचो मायजूस्तात मासाम पड़कीश्चन गोविंदेति हरिर्नाम जी गोविंदेति हरिर्नाम गेयं गायस्व नित्यश गेयं गायस्व नित्यशः। स्कंद पुराण का ये श्लोक है। so Skanda Puran's verse is in front of your screen, which says that if you chant the holy names, then there is no need to pursue the Vedas, etc. So Richo means Rig Ved. माने ऋग वेद, माँ माने नहीं, संस्कृत का ये शब्द है। Ma means संस्कृत no. में माँ का अर्थ होता है नहीं, तो In Sanskrit, Ma means no. ऋग वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। So Richo means Rigved. So there is no need to read Rig Vedo, यजुर्वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, and there is no need to read Yaju or Yajurveda, नहीं है। तो माँ nor is the माँ यजु, माँ necessity to read the Samaved. ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कब, किसको? तो नीचे So कहते हैं it is not necessary to read all these for whom? In the second line it says, जो गोविंद, जो भगवान श्री कृष्ण के so नाम को, those हरि who नाम को गाता है, chant the holy names of Govinda, or the person who chants the holy names of Mahamantra on a daily basis, Nityasha, then they don't need to read any of the Vedas. क्योंकि इन वेदों को पढ़कर आखिर करना क्या है? Because नाम ही तो लेना है ना। what we have to achieve after reading the Vedas, so when you have already got the conclusion or essence, then if you don't get time to read all these, then there is no loss at all, because chanting of the holy names is primary. Vaman Puran says, क्योंकि हमारे अमेरिका के लोग, हमारे जगदीश भाई, प्रमिला माता और फिर बहुत सारे लोग जिसके मन में एक अभाव होता है कि भाई अब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, the people in US especially have a thing that a thought in their mind that we cannot go anywhere, we cannot go to India, we cannot visit the holy places as we are busy in our work, etc. But Vaman Puran mentions if someone chants the holy name, then he doesn't even need to go to any holy places. So the first Skand Puran says that there is no need to read Vedas if you chant the holy names. Vaman Puran says that if you chant the holy names, then you need not to do pilgrimage. If you do, it's good, but it's not necessary. तीर्थ कोटि शतानि च तानि सर्वाय वाप्नोति विष्णुनामानि कीर्तनात् विष्णुनामानि कीर्तनात्। कहते हैं तीर्थ कोटि सहस्त्राणी,
सहस्त्राणी माने कोटि, सहस्त्राणी माने 1000। it says that Koti Sahasrani means 1000 crore. तीर्थों में भ्रमण करने का जो फल मिलता So है, the benefit और तीर्थ that we get by going on pilgrimage और 100 करोड़ 1000 crore times, और नदी के जल में स्नान करने का फल and मिलता है, the करोड़ तीर्थ में भ्रमण करने का benefit of dripping into the holy waters जो मिलता है, 1000 crore times is equivalent, वो सारा फल जो है or that all benefit भगवान विष्णु can be achieved by just chanting the holy names of the Lord. प्राप्त है। ये जो हम लोग सुबह बैठकर एक साथ मिलकर जो करते हैं ना, बड़ी So what we are doing here is splendid. 1000 करोड़ तीर्थों में भ्रमण और करोड़ों सरोवर पवित्र कुंड में स्नान का जो फल, वो केवल हरि नाम लेने से मिल जाता है। इतनी महिमा हरि नाम की है। हरि नाम सर्वशक्ति संपद। एक बहुत सुंदर कंध में कहा गया कि कलयुग में क्या हुआ। So it is mentioned in Skand that what happened in the Kali Yuga. Please listen carefully. All good deeds, that is the Sat Karma, सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पुण्य कर्म सत्कर्मों से पावर निकाल दिया और वो सारे so the power was taken out from them नाम में डाल दिया। समझ रहे हैं? and was put. स्कंद पुराण का ये श्लोक है, कहते हैं कि दान, व्रत, तप, तीर्थ, क्षेत्र आदि, The chanting of the holy names. शक्तयो देव महताम सर्व पाप हरा शुभा। आप एक एक चीज पकड़िए। सबसे पहले कहते हैं दान। दान में जो फल मिलता है, दान करना बहुत बड़ी बात है। The benefit of getting, doing the charity, व्रत करने का जो फल है, fasting, करने का जो फल है, and third is austerity, that is tapa. क्षेत्र आदि ना आदि, Fourth is tirth, means the pilgrimage or holy places. शक्तयो देव महताम, देवताओं की उपासना करने से जो फल प्राप्त होता है, And the fruit देव उपासना of worshipping the demigods, सर्व पाप हरा शुभा, जितने भी शुभ कर्म है, उन शुभ कर्म करने का जो फल, and all the good deeds or pious deeds, राजसूय the benefit of the same, राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल, and the fruit of अध्यात्म वस्तुतः performing a Rajasu बहुत ज्ञान ग्रहण करने का फल है। yagya or Ashwamedha yagya, सारे कार्यों में से भगवान and ने क्या किया? Gyan and Adhyatma Vastu, etc. इन सारे सत्कर्मों में से All these जो भी सत्कर्म activities or good deeds that are to people that people perform, आकृष्य कर लिया, खींच लिया, and he दान का फल, तप का फल, pulled यज्ञ का फल, them ये all सारे फलों को खींच लिया और स्थापयित्वा स्तेयु नामसु, चौथी लाइन में, and इन सारे पवित्र established it in को खींचकर आकृष्ट the chanting of the holy भगवान ने name. अपने नाम में उसको स्थापित कर दिया। इसका अर्थ क्या होता है कि So what does it mean that all the good deeds fruit can be achieved by chanting the holy names? So if we chant the holy names, तो ये सारे कर्मों का फल केवल महामंत्र then से प्राप्त we will get all the benefit of all these good deeds just by chanting देखो एक बात कहूं, the Mahamantra. बाकी सब लोग मानो अन्य अन्य उपायों से उद्धार हो सकता है, लेकिन हमारे टाइप के जो लोग हैं ना, हमारा तो So the people like us, और कोई उपाय नहीं है। जो मेरे टाइप there is no other solution for
people like us, के अलावा काम बनने ही नहीं वाला है, क्योंकि पद्म पुराण के एक श्लोक में कहते हैं, ऊपर श्लोक because उधर Padma लिखा है, Puran mentions इस श्लोक में in पद्म the पुराण में बहुत above सुंदर कहते screen, हैं कि अनन्य गतयो मर्त्या भोगी नोपि परंतपा ज्ञान वैराग्य रहिता ब्रह्मचर्या आदि वर्जिता। ये हमारे टाइप के लोगों की बात, आप तो शायद हो सकते हैं, मैं मेरे टाइप की बात कर रहा हूं। ज्ञान रहिता, जो आदमी so के Gyan Rahita, so that person who has no knowledge. So let's start with the first line. Bhogino api, that means a person who is engrossed in फिर दूसरी लाइन में कहते sense हैं ज्ञान रहिता, gratification. वैराग्य रहिता, Gyan ब्रह्मचर्य Rahita रहिता। and Vairagya Rahita. जिनके A जीवन में person ज्ञान who है, has वैराग्य no है, knowledge, वैराग्य है, no सर्व धर्म निष्ठा, renunciation, किसी nor भी धर्म का the पालन नहीं करता, brahmacharya, माने and the one who never follows any religion. लेकिन वह That आदमी means that he विष्णु does नाम nothing मात्र but एक जल पका, लेकिन वो केवल विष्णु का नाम, हरि का नाम, कृष्ण का नाम ले but लेता है, if we just तो chants सत्य the holy ज्ञान names of the विज्ञान देता है। Lord, तो Vishnu, कहते हैं Rama or इस दुनिया Krishna, में जो बड़े बड़े विद्वान पंडित, जो ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, then ब्रह्मचारी हैं, the greatest बहुत तपस्वी हैं, उनको जो गति exalted मिलती है, devout वही गति saints सभी में or से पाप करने वाला people जो who are हरि नाम renouncers of लेता the है, worlds, तो हरि etc., नाम लेने वाले को get वो this बड़े बड़े liberation. महात्माओं की That गति same प्राप्त होती है। kind of deliverance is इसलिए जीवन में achieved by just chanting the holy names of the हमें Lord. हरि नाम So, अवश्य लेना through चाहिए। in our life, if we are not able to do anything, पिछले but at 6 least we should दिनों से chant the holy names. लगातार So, since हरि last नाम 6 की days, महिमा, हरि नाम की we have विशेषता, been सत्व को singing सुन रहे the हैं। glories and वैसे splendor जीवन of भर the holy बोला जाए फिर names. भी कम पड़े, क्योंकि शास्त्र तो So, हरि नाम if के we लिए ही speak लिखे हैं। throughout our life, then लेकिन जैसे also जब it is हमारे less. मन में जिज्ञासा हो कि If भगवान we राम का have स्वरूप an कैसा, धनुषधारी inquisitiveness in our heart, है, then कृष्ण what का is स्वरूप the कैसा, श्याम सुंदर पीताम्बरधारी, form हाथ में of मुरली, Lord मुस्कुराते हुए। Ram or Lord Shri Krishna? लेकिन कदाचित आपके मन में ये प्रश्न हो कि हरि नाम का But स्वरूप if you कैसा have है। a question that राम का what स्वरूप is the तो form बिल्कुल of समझ में आ Harinam? गया, कृष्ण How का does स्वरूप समझ में आ Harinam गया, looks? हरि नाम का स्वरूप कैसा। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों ने नाम को भी प्रभु कहा। नाम एक Because पर्सनालिटी in our है, हरि नाम Shastras, even सो the नाम का स्वरूप क्या है, Harinam is रूप और स्वरूप। addressed as a नाम तत्व, person. नाम स्वरूप क्या है। तो संक्षिप्त में यदि मैं आपको So, वर्णन what करूं, तो पद्म is पुराण में कहते the हैं Harinam नाम का as स्वरूप इस प्रकार से है। personified? So, if I describe it, so it is like this. चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नामनामिनो अभिन्नत्वा नामनामिनो। ये है नाम का स्वरूप। So, this is the आप ये हरि नाम लेते हो, हरि नाम का स्वरूप है सीधा चिपका देना एक form शब्द, ये of स्वरूप है हरि नाम। Harinam. हरि नाम ऐसा है। So, this is how Harinam केवल looks. श्लोक से तो काम नहीं बनेगा, इसको थोड़ा समझना होगा। So, we need to understand this. तो इसका अर्थ क्या है, इसमें टोटल So, 6 what is the चीजें meaning? ब्रेक डाउन करके बताऊं तो It इजी हो has, जाएगा। let's break it. टोटल 6 This चीजें has 6 हरि नाम का things स्वरूप in कैसा। this verse. तो सबसे पहले नाम चिंतामणि, ये हरि नाम So, का the स्वरूप first is चिंतामणि। Nam कभी आपने कभी Chintamani. देखा तो नहीं होगा, सुना होगा। चिंतामणि का अर्थ होता है कि So, what is Chintamani? ऐसा मणि होता है, मणि It जिसके it पास is वो मणि a मिल जाए, jewel. फिर वो अपने
someone has that jewel, होता है, then वो चीज whatever he इस तरह thinks, से वो चीज उनके सामने प्रकट हो जाती है। and that thing इसको कहते manifests हैं in चिंता। front of their eyes. That is called a नाम का chinta स्वरूप mani. कैसा है? पद्म पुराण So, कहता है कि what is नाम the form of the चिंतामणि, name? हरि नाम जो It है is चिंतामणि Nam है। Chinta इसका Mani. अर्थ क्या बनता है कि हरि नाम का स्वरूप ऐसा है कि जैसे That the चिंता chanting of the holy name is तो हमारी like सारी if मनोकामना we पूर्ण हो get सकती है, हम जो भी मांगे मिल सकता है। the ठीक उसी Chinta प्रकार Mani, then भी यदि all हरि our नाम मिल wishes जाए, are fulfilled. अर्थात हम Similarly, हरि if नाम का we जाप get the करते holy हैं name, तो हमारी सारी मनोवांछा sorry, मनोकामना पूर्ण हो सकती then all our desires will be fulfilled. है। दूसरा, एक तो वह नाम चिंतामणि, दूसरा कहते हैं कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम का स्वरूप क्या है? कृष्ण, जो And the भगवान second कृष्ण है, is उस that भगवान श्री कृष्ण Krishna. के भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य रस विग्रह। भगवान श्री कृष्ण का So the चैतन्य, name चैतन्य माने is like एक्टिव, Lord Krishna's चैतन्य से मरा हुआ नहीं, इसका Chaitanya अपोजिट है मरा हुआ, Vigrah. So जड़ पत्थर। Chaitanya is लेकिन चैतन्य माने जीवित। filled with life. कृष्ण का चैतन्य रस विग्रह है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये नाम भगवान श्री कृष्ण That means that this name रस विग्रह है, माने कृष्ण में जो is रस है the वो सारा रस mellowful उनके नाम में है। form of Lord Sri Krishna नाम का स्वरूप personified. तीसरा कहते हैं पूर्ण। And the third is नीचे Purna. दूसरी लाइन में In the second line, नाम के स्वरूप में तीसरा पॉइंट है कि the नाम third point is सदा Purna. और सर्वदा पूर्ण तत्व है। नाम So that सदा और means सर्वदा it is पूर्ण तत्व। complete फिर कहते हैं शुद्धो, in element. ये नाम जो है परम शुद्ध Then है। यद्यपि Shuddho जड़ जगत means it is जिसमें most अनेकों pious. अशुद्धि है, Although this material world असत्य है, is filled with impurities, जड़ lies, जगत में इस नाम का उच्चारण yet करे फिर भी वह by परम chanting these holy names in this material world पूर्ण है, can make शुद्ध है। us purified. फिर आगे कहते हैं पांचवा पॉइंट है नित्य Then मुक्तो। they add further ये हरि नाम Nitya Mukto. नित्य मुक्त है। Nitya means eternal. इस संसार के नाम जो है ना अनेकों प्रकार के So बंधन the में बांध names रहे of in this, या फिर संसार के all the नाम names in अनेकों this material प्रकार के world बंधन में बांध देते हैं। create परंतु bondage कृष्ण का for नाम जो us. है But पूर्ण if we नित्य chant है। the holy names of और Krishna, फिर छठा then लाइन में we कहते will हैं become eternally पूर्णतत्वा liberated. नाम नामिनो। नाम And और नाम lastly, में अभिन्नता है, माने नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। so there is no difference नाम में between कृष्ण the है names of the और नाम Lord है उनका नाम and कृष्ण है। his names. तो भगवान कृष्ण में So there is no difference between the Lord and his holy कोई names. अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुख्य चार चीज है, नाम, Lord Shri Krishna has four things: रूप और लीला। name, qualities, और ये चारों नित्य है। कृष्ण form, के नाम and नित्य है, कृष्ण के गुण नित्य है, कृष्ण का रूप नित्य his है pastime. और So कृष्ण का all लीला these things नित्य है। are eternal. ये चारों नित्य होते हुए भी And although they कृष्ण all के are नाम, eternal, रूप और लीला में यदि पूछा जाए कि इसमें मुख्य क्या है, but if we ask what is तो primary कहना पड़ेगा out of the all इन these चारों में four, मुख्य then मूल में बैठा है कृष्ण का the नाम। fundamental or the root सबसे is पहले the name, कृष्ण का holy नाम names of लिया the जाता Lord. है So the और first thing कृष्ण is के that we नाम should के chant the द्वारा holy कृष्ण names, के गुण समझ and में आते हैं। by और chanting जब the holy कृष्ण के names, we गुण समझ में आने लगे try तो to फिर कृष्ण understand का his रूप समझ में qualities, आता है and then we और कृष्ण का रूप समझ में आए तो फिर कृष्ण की understand लीला का his दर्शन होता है। form, and then तो we और are फिर able उस to लीला में हमें प्रवेश मिलता है। understand the तो कृष्ण pastimes of लीला में प्रवेश proclivity पाने of के लिए Lord Shri पहले Krishna, रूप क्लियर होना चाहिए, रूप के and बारे we में गुण can क्लियर होना enter चाहिए the और pastimes सबसे of the पहले Lord. उनका नाम लेना चाहिए। सो पहले नाम, गुण, रूप और लीला। तो कृष्ण लीला में
प्राप्त करने की जो जर्नी है उसकी शुरुआत So, कृष्ण के नाम से होती है। to achieve the pastimes of the Lord, this is the way we should take. So that is the reason that we should chant the holy names of the Lord daily. अब आज क्योंकि अंतिम दिन है, सातवां So दिन now, है, as it's the last कथा day में नाम महिमा of होगी the नहीं Katha, होगी, and we don't know whether we will have Nam Katha है कि in नाम the next तीन Katha. प्रकार के होते हैं। But let me सब add, बैठकर the हरि नाम names लेते हैं, are of three लेकिन types. सबको समान फल नहीं मिलता। So बाहर से तो लगता है everybody कि ये सब हरि नाम doesn't कर रहे get हैं, the इसमें same सब पहुंच fruit चुके हैं वैकुंठ when में। बाहर से तो लगता है कि हरिदास ठाकुर, externally लेकिन these ऐसा all नहीं will है। reach बहुत the से eternal. नाम तीन But प्रकार the के हैं। stage of chanting the holy names is first तीसरे क्लास Aparada Yukta Nam, उसके ऊपर सेकंड that क्लास is का the है third class. नामाभास, Something better than that is और फर्स्ट क्लास का Namabhas, है शुद्ध नाम। and the first, लेते हैं तो ये तीन कैटेगरी whenever we किसी chant और the holy कैटेगरी में names, होते हैं। so सर नहीं, we आते are किसी और in कैटेगरी में either होते हैं, of किसी the और one कैटेगरी में, category. किसी और It कैटेगरी might में। be possible स्वामी that जी की बात कर one रहे day हैं, we are in one कैटेगरी को category and the शुद्ध, other day we are in second, or और in इन the तत्वों one को round we ध्यान are से in some समझना category चाहिए, and the other we are in other ताकि category. हम इस गलत फहमी में न रहे कि बस नाम की महिमा सुनी, हम बहुत नाम ले रहे हैं, अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी So it समझना should है not कि हमारा happen काम that किस क्वालिटी का है। we just chant the holy name क्वालिटी से and काम so नहीं we चलेगा, will get क्वांटिटी भी मैटर everything करती that we है। desire. No, the only not only the क्वालिटी के quality बारे but में पता quantity हो तभी matters. मेंटेन करें ना, पता ही नहीं है So क्वालिटी किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉलोइंग only क्या है। when we have the understanding of the तो हमारे quality of our आचार्यों ने तो and तीन improve भागों में on the डिवाइड same. किया है। So our acharyas have divided रास्ता है तीन the भाग में, chanting of the names in तीसरे से the शुरू करें, stages in नीचे से शुरू। three. थर्ड क्लास का So, ही नाम लेते हैं, आप सब फर्स्ट क्लास में हो, so the तो मैं मेरे जैसों की बात करूं। थर्ड so क्लास if I का talk नाम about जो है myself and वो people है like अपराध me, युक्त नाम। so the first category is मतलब अपराध के Aparadha साथ Yukta Nam. हरि नाम का, हरि नाम तो ले रहे हैं, That is, हरि नाम तो हो रहा है, बाहर we are से तो chanting the दिख रहा holy है, names, but लेकिन हरि so नाम के we साथ साथ people can अपराध see externally that we are chanting, but with और हरि along with नाम that के we are प्रति doing the 10 offenses, प्रकार के अपराध है, 10 and प्रकार there are की 10 ऐसी types वस्तु of offenses जिसको towards the करने holy से, names. एक और आप हरि नाम करते रहो और दूसरी ओर ये 10 में से एक भी करते हो ना, तो ये प्लस So माइनस even if you are करके chanting 0 the पे holy सेट हो names and जाएगा। दो if माला you किया, दो are ऑफेंस doing कर लिए, any 0 पे one of जीरो, the 0 पे offenses, जीरो, एक और माला करते जा रहे हैं। then પછી ગુજરાતીમાં it કેવું, will nullify our results શિયા of રે chanting. પારા રે તને ક્યાંથી મળે, सारे घिस जाते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एक और माला जप करते हैं, दूसरी ओर अपराध कर रहे So हैं। on the other hand, we are chanting the holy names, and the डॉक्टर other के hand, पास जाते on हैं, one hand, we are chanting the holy जब names, and the बीमार other, होता है, रोग होता है, we are तो डॉक्टर doing हमें offenses बीमारी of the बताता holy है, names. So when we are दवाई के sick, साथ the साथ doctor परहेज gives us देता some है, ये medicine खाना, ये नहीं and खाना, ये he करना, ये नहीं करना। tells us what एक to और हम avoid and दवाई what खाते to रहे, eat. दवाई खाते रहे, और So उसी if we ओर keep on परहेज न eating the करें medicine तो हम but ठीक नहीं don't होंगे। avoid whatever we are not दवाई के supposed to साथ साथ eat, परहेज भी तो होनी चाहिए ना। तो एक और हरि नाम so लेना these है, both go हरि hand in नाम लेते hand. लेते परहेज भी करनी है कि कहीं Similarly, गलती ना हो जाए। the तो chanting ऐसे तो and बहुत सारे अपराध है, offenseless नाम chanting अपराध, वैष्णव अपराध, both सब go अपराध, hand in hand. लेकिन So they're स्पेशली quite हरि नाम को इफेक्ट करने वाली 10 वस्तु है। so so the भक्तिमय 10 जीवन में things that सबसे ऐसी that वस्तु affects है our जो chanting of the holy सीधे हमारे names हरि are, नाम को इफेक्ट करती है। तो जाते जाते लगे हाथ, हम ये 10 वस्तु so let मैंने me ब्रेक डाउन करके ही लिखे share हैं it नंबर with के you. साथ, ताकि आप लोग इसे समझ सको। इन 10 वस्तु का वर्णन पद्म पुराण So में हुआ है। ये कोई it's mentioned दिमाग in the दिमाग बुद्धि Padma की बात Puran. नहीं है, या कोई साधारण बापू बाबा की बात भी नहीं है, ये व्यास वचन है भक्तों। श्री वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में लिखे हुए वचन, So Vedvyas Muni writes in Padma ये Puran, वचन सनकादिक नारद
And it was repeated or told by Sankadik to Narad Muni. तो सीधे व्यास मुनि का वचन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सताम निंदा नाम्नः परम अपराधवित नुते यत ख्यातिम यतः ख्यातिम यातम कथमो सहते तद विगर्हा। हरि नाम के प्रति इफेक्ट करने वाला, मतलब हमारे हरि नाम को खाने वाला चुड़ैल। So, जानते हैं चुड़ैल? you know about the witch? लग जाती है ना। So, a person who gets affected by the witch, so whatever he may eat, but he doesn't gain any weight because the blood that is generated by the food is taken by the witch. So, when we chant the holy names, we, we are collecting the wealth, our spiritual wealth, ये सब चला न जाए, इसलिए इन बातों को ध्यान but रखना चाहिए। so that it should not get affected, we should be careful. So the first and foremost is Satam Ninda, that is blaspheming the exalted devotees. So here the meaning of a saint is, Prabhupada says, a person who has dedicated their whole life for preaching of the holy names. So blaspheming or criticizing such devotees, then it is considered as the offense against the holy names. So although we are blaspheming the devotees, but it is considered as the offense against the holy names. And this is the speech of Vyasadeva. So it is considered as the offense against the names. So this is the first offense. And the second offense against the name is Shivasya, means the Devadi Dev, and Vishnu Tattva, or the element, that means Rama, Krishna and Vishnu, etc. So the qualities and names of Shiv Ji and Vishnu, and they see them differently, then definitely this chanting of the holy names is not beneficial. Harinam ahitkar. He will never get benefited. The one who tries to separate Shiva and Vishnu and they think that they are different or their glories are different, are those who disrespect Shivji. Whatever quantity he chant the holy names, but he will never get benefited. So sometimes people say that we chant the holy names since last 15 years, but we are not getting the benefit. So it is because we are doing all these offenses. The third, Gurur Avagya, that means that disobeying our bona fide spiritual master. So first, we should not make a bona fide spiritual master very fast. First, we should understand and inquire about the spiritual master.
And once you have decided or made a bona fide spiritual master, then his speech should be our goal of the life. But what we do is we make Guru very easily, and then we disobey them or we don't respect them fully. We're not fully surrendered to them. So that comes under disobeying the bona fide spiritual master, which is again a offense. Then, fourth, to criticize the Vedas or the holy scriptures, all these are considered as offenses. So some say that we don't believe in Gita or Bhagavatam, etc. So that is a offense because Vedas are our mother. As a mother only can reveal who is the father, so through the medium of Vedas and our scriptures, we can understand about our father, that is Lord Sri Krishna. So the fifth is Tatharthvado. So ये तो बस ये बढ़ा चढ़ाकर हरि नाम की महिमा बोल रहा है. So people might be thinking that I am exaggerating the glories of the holy names. But if we think about like this, then that also is considered as an offense against the holy names. And the sixth offense is to think that the holy names are imaginary or kalpanic. So thinking that the holy names are imaginary is an offense. न विद्यते तस्य यमे ही शुद्धि. नाम के बल पर पाप करना. To हरि नाम लेने से do offenses on the power of chanting of the holy names. So if we think that we chant the holy names and now we can sin or do something that is sinister, and by chanting all my sins will be removed. So this is also an offense towards the Nam. The chanting of the holy names removes our sins. But it is like misusing your position as a police officer. So it is an offense. So on the basis of the potency of chanting the holy names can result in so whatever hard work or labor he puts in chanting, it will never benefit such a person. Dharma, vrat, tyag ho. So all these activities, the self-righteousness, austerity, and fasting, etc. So we were discussing that all the potencies are taken and put in the holy names. So all these good deeds, it is better, the chanting of the holy names is better than all these karma. And if you consider that they are equal, then
that is the seventh offense against the holy names. Oh, the eighth offense towards the holy names. सो हरि नाम को उनके समान या उनसे स्वतंत्र। नौवा अपराध है And the ninth अश्रद्धालु, is जो अश्रद्धालु है, विमुखे अपि, जो भगवान से विमुख है, शृण्वन्ति यश्च उपदेश शिव नाम अपराध है। शॉर्ट में इतना ही कि जो अश्रद्धालु है, so a person who is को हरि नाम का unfaithful क्योंकि अश्रद्धालु को आप to सीधे हरि नाम की महिमा आप to देख सकते हैं ना, tell them the importance of the holy names लेकिन of हरि the नाम Lord की महिमा to क्या मैं नहीं जानता था? क्या हम लोग हरि नाम नहीं जप करते? non-devotees or लेकिन people who don't have हरि नाम की faith. महिमा आपने कब सुनी? 2 साल के बाद, So you have seen that लोगों में श्रद्धा आई और हरि we नाम जाप have करने लगे। been performing these kathas last those years, but and we all are aware of the potency of the holy names, but we never discussed it before. Why? Because until the faith is built, then तो अश्रद्धालु के सामने हरि we नाम should का not उपदेश reveal करना that to वो भी them, एक बहुत as बड़ा it अपराध they है। can offend और फिर the holy names by disrespecting them. ये अपराध आज तक And आपसे नहीं हो lastly, रहा था, लेकिन इस कथा के बाद ये अपराध आपसे शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है so श्रुते अपि this you नाम haven't महात्म्य। been done since, आपने नाम की महिमा सुनी, but ना किसी now, दिन, नहीं सुनी होती तो अच्छा था। अब नाम की महिमा सुन ली, so और after you नाम have की heard महिमा the सुनने के बाद glories भी of the holy हरि names, नाम जप न करे, हरि and नाम then की उचित also न if you're पढ़े, not तो chanting the ये हरि holy नाम names, का 10वां अपराध है। then it is the 10th इसलिए offense श्रुति against the अपि holy सुनने names. के बाद भी क्या सुनने के बाद भी? So नाम after महात्म्य, hearing the हरि नाम की splendor का महात्म्य of the सुनने holy के बाद names, भी यह प्रीति रही तो, हरि नाम के and प्रति yet प्रीति न you हो, have no attraction towards the holy तो names, ये हरि नाम के प्रति अपराध है। then मैंने आपको it is an सारे offense अपराध against the बताए, holy चारों names. के 6 दिन तो आपने सुन लिया, इतनी इतनी महिमा, और अब भी हरि नाम में रुचि और प्रीति न हो, तब तो अपराध हो जाएगा। इसलिए हाथ में ले लीजिएगा So और महामंत्र please का जप chant से करने लगिएगा। and तो ये है enjoy 10 chanting the holy names. हरि नाम के प्रति ये अपराध है। इसलिए जब हम हरि नाम जाप करते हैं, इन 10 वस्तुओं से बचना So that is the चाहिए। reason when we chant the holy names, ध्यान we रखना should है try to कि हरि avoid नाम से all these बचना है। offenses. अब हमारा क्या है? कुछ लोग हरि नाम लेते हैं लेकिन इस So कैटेगरी some में है people chant the holy names. कि भाई They हरि do नाम it भी in ले the रहे third हैं category. और They're ये chanting and they are doing offenses थर्ड कैटेगरी। अब इसके ऊपर of the आएगी holy names. सेकंड कैटेगरी। So let's move on to the second category, that is नामाभास। namabhas. एक तो है अपराध युक्त हरि नाम, अब दूसरा है नामाभास। So the second is namabhas. उसके पहले एक निवेदन कर दूं कि So मानो before किसी we move ahead, के let जीवन में me नाम अपराध हो चुका है, give a respect. किसी से हरि नाम के प्रति अपराध हो गया, So if somebody has जाने अनजाने, अब तो आज सुना उसके पहले done मान लो हो गया, या आने वाले दिनों में the जाने अनजाने में offenses ये जो against the 10 अपराध, chanting अब हम मनुष्य of हैं, the holy हमसे names, गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? because we are all humans, we make mistakes. हो जाए तो हरि नाम So if we नाम अपराध have से committed मुक्त any होने का कोई offense उपाय है? against the name, then उपाय what क्या is the है? solution? मिसयूज ना हो, ऐसा नहीं कि I'm telling you the solution, उपाय but that doesn't mean that उपाय बता we, देता हूँ we should कि misuse अगर it. जाने अनजाने में हो गया If it sometimes happens with us, then इसका what we मतलब should ये नहीं do? कि अपराध करते रहो और फिर उपाय That करो। doesn't mean that we should keep परम on भगवत गीता committing के the offenses and स्वर्ण then खंड के using this. 48वें अध्याय के 49वें नंबर के श्लोक में नाम अपराध से मुक्ति का उपाय बताया गया। So there स्क्रीन is में a solution in front of your screen.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. नाम अपराध युक्तानां नामानि एव हरन्ति यघम् अविश्रान्ति प्रयुक्तानि तानि एवार्थकराणि च तानि एवार्थकराणि च। गलती से So if by mistake somehow we have committed an offense against the holy names, although it is highly impossible to do so, but there is only one solution to do so. It's mentioned in Padma Puran. If somebody has offended the holy names, then how we can get relieved of that sin or offense? Then that chanting of the holy names only can relieve us of that offense. So that name itself will remove or absolve our offense. But what name? Avishranti means that means with enthusiasm or steadfastness and constantly. Prayuktani means constantly. And when we do that, then we will be relieved of the offenses against the holy names. So, first, we should try not to have any offenses against the holy names. But if it happens, then we should chant the holy names, asking for forgiveness with humility, steadfastness, and enthusiasm. And then only we can be relieved of the offenses against the holy names. So, if it's in your heart, that how we will get to know that we have been relieved of our offenses. So Chaitanya Mahaprabhu says, if you are relieved or absolved of the offenses against the holy names, if the four things are happening in your life, then that means that your offense against the holy names is being removed. First, detachment towards the material carnal desires or sense gratification. So if we are, when we get to the stage of complete detachment from sense gratification, means that we are getting offense, our offenses are getting absolved. Second is humility, and that humility should be natural. It should not be artificial or superficial. It should be humility that is from the heart. That means that we are relieved of our offenses. Next, third, so getting relieved of envy and the mercy is manifested in our heart, then that means that we are relieved of the offenses against the holy names. Then he adds the pride of the material
position in this world, that means that our offenses are getting removed and our heart should be soft. We should be soft hearted and kind. जिस व्यक्ति We की should जितनी have, जड़ी है स्थिति है उसकी स्थिति के अनुसार उनको रिस्पेक्ट उनको आदर देने we की should भावना होने respect लगे सबके everyone प्रति according to their अपने आप में position. अपराध If ये we तो achieve अपराध that की बात नहीं situation, that माइनस की means बात हो रही है कि हम लोग माइनस से जीरो लेवल पे आ रहे हैं हैं? ऊपर के so लेवल now की तो बात ही कुछ और है ये तो जो माइनस में घुस गए हैं अपराध so कर that करके now that we वो have जीरो reached लेवल the पर आ गए negative हैं level after doing the offenses, so this is how we can judge ठीक है ourselves. तो ये हो गया थर्ड कैटेगरी का थर्ड क्लास का हरि नाम मैं तो कहूँगा हम तो थर्ड क्लास में भी नहीं आते उसके बाद जो फोर्थ क्लास होगा फिफ्थ होगा शायद उसमें फिट हो जाए तो ये तो हुआ थर्ड क्लास का हरि नाम So अब this is the third category. का हरि नाम The second category, a type of chanting is, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं उसके ऊपर सेकंड let me क्लास tell का in हरि short. नाम है उसे कहते So हैं the second नामाभास class is दूसरे Namabhas. लेवल पर जो है वो है नामाभास माने माने टोटल नाम हरि नाम तो हम लेते हैं वो तो कंप्लीट होता है हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं वो तो कंप्लीट हो रहा So है the chanting of the holy names is लेकिन complete, उसका इफेक्ट जो है हमारे दिल पर but वो the अभी effect पूरा नहीं of हो रहा है chanting the holy names, we क्योंकि don't हम लोग get नाम का the full आभास हो गए benefit. जैसे मैंने We कहा are था just कि आप किसी किसी feeling. कोई मॉल में जाते हो वहां पर बहुत सुंदर So केक if you, सजा कर as रखे we हैं explained रसगुल्ला yesterday, गुलाब that जामुन if मिठाई we go to a तो काश sweet shop उस and the sweet is kept हम in सगड़े a देख रहे हैं लेकिन उसका glass जो आस्वादन display, नहीं हो रहा है then we can just look at शिल it, but प्रभुपाद जी we are कहते not हैं able to घी का enjoy ढाबा है the taste. So, और वो बंद है तो like मतलब Prabhupada says घी that के ढक्कन को the चाट रही है वहां पर कोई रस नहीं a मिलेगा bottle आपको of honey closed, you cannot तो feel नामाभास the माने taste हरि नाम तो from है लेकिन डिब्बा by बंद है just touching. वो कांच का दरवाजा बंद है ले रहे हैं लेकिन वो आस्वादन वो रस कुछ नहीं So we are chanting the holy names, इतने but अभी there तो is साथ no में mellow तो नामाभास का अर्थ है or attachment कि जो पवित्र yet. नाम जैसा प्रतीत होता है So लेकिन वास्तव Namabhas में means, पवित्र नहीं होता लगता तो है हरे कृष्ण 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 कि भाई ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बाद यही आदमी है हैं? लगता तो है कि भाई ये बहुत महान है feel that लेकिन वो they पवित्र might be नहीं हुए they are exalted, but they are not नाम का purified yet. नामाभास अविद्या त्रुटि अथवा भ्रम का परिणाम होता है And it is a result of our इस अवस्था में भगवान का avidya, नाम बिना भक्ति या बिना स्पष्ट ज्ञान के जपा that जाता is है our इतनी ignorance. भक्ति नहीं है इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं है फिर भी हरि So नाम we जप don't रहे have हैं knowledge, but तो still we ये are थोड़ा chanting the सा holy ये names. नामाभास है So that is the second category. हालांकि इस नामाभास का भी बहुत ज्यादा फल है Although it is also लेकिन quite नामाभास से beneficial, कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता but by ऐसे Namabhas, और बहुत you सारी cannot कैटेगरी है get इस सेकंड the क्लास love की of the Supreme Personality of Godhead. लेकिन परम फल नहीं प्राप्त हो सकता ओके इसे समझने के लिए भागवत का एक श्लोक कहूँ श्रीमद् भागवत छठे Let me स्कंद के share दूसरे a अध्याय का 14वां shlok श्लोक from Bhagavatam. अजामिल के प्रसंग में In 4 the प्रकार के pastime of नामाभास Ajamil, there are 4 types यहाँ of पर Namabhas. 4 टाइप्स के होते हैं कैसे श्लोक में आपके सामने रखूं That is realization of the holy names. साकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभमहेलनमेव वा वैकुण्ठनामग्रहणम् अशेषा अगहरं विदु भागवत के छठे स्कंद में अजामिल So प्रसंग in में the 6th canto of Shrimad Bhagavatam, नामाभास का वर्णन हुआ 4 times, एक 4 types of साकेत्यम Namabhas are mentioned. दूसरा परिहास्यम तीसरा First स्तोभम Sanketyam, और Parihasyam, हेलनम Stobham, चार and the प्रकार के last is नाम Helinam. सेकेंड क्लास का जो नाम है ना
So the second category has four categories. Sakitya means direct, giving the direction, they're chanting the holy names. So he's chanting the holy names. Example is Ajamil. Ajamil also took the names of the Lord, and he avoided going to the hellish planets, but the chanting was not pure, pure. It was not offenseless chanting. So it was Sakyatyam category of Namabhas. This is a very technical matter. आनंद आ रहा है या समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन अब हो गया तो अब कंप्लीट कर देता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हरि नाम, हम ऐसा नहीं कि सबको एक तराजू पर तोल दो कि बस सब लोग हरि नाम, इसमें बहुत कैटेगरी है। और so there are quite a few categories in chanting. So that we need to understand that where we stand and how we can progress further. So he directed or gave or pointed towards his son whose name was Narayana. So he will get the fruit not of. कोई शुद्ध भक्त हरि नाम ले रहा है, chanting of offenseless chanting. So if someone is chanting the holy names and somebody criticizes them, the people of demonic quality who criticize people who are chanting the holy names, but yet indirectly they are chanting the holy names. So although they are criticizing or blaspheming, but yet they're chanting the holy names. So it is Parihasyam Namabhas. This is the second category. There are quite a few organizations. They chant the holy names. Although they take or they have personified the name of a saint, and so they will get the benefit of chanting, but that will be the Namabhas category. But all the chanting cannot be considered equal. So the third category is Tobham. So while scolding someone, so in most of the movies in 60s and 70s had a servant named Ramu, and so he was criticizing the servant, but indirectly he is chanting the holy name with anger. So sometimes people ask that our family members don't accept or understand the chanting. So if someone from our family scolds us that will only the chanting perform all the activities for you, and when even in the discussion, that also they also will get benefit of chanting the holy name, but that will be the Namabhas category.
And the last is Helen, बिल्कुल निरादर के साथ, that is कृष्ण तो disrespectful. चालू है, कृष्ण तो फलाना है, कृष्ण So तो ऐसा है, criticizing or कृष्ण blaspheming ऐसा the है। Lord, इस कैटेगरी में आता है शिशुपाल। शिशुपाल ने like 100 गाली दी, Shishupal. लेकिन 100 गाली में कृष्ण की एक माला हो गई उसकी। 4 केवल 8 बाकी रहा। So although he बाकी गाली देते हुए नाम तो although he लेता है, criticized the Lord कृष्ण 100 ऐसा, times, but कृष्ण yet ऐसा, कृष्ण ऐसा, तो at कृष्ण का least नाम तो शिशुपाल most ने of लिया। his 108 हेला हुआ, chanting was done. हेलना के साथ, अवहेलना के साथ नाम लिया। Helta इसलिए बाद means में जब availna or शिशुपाल disrespect. जब मर गया, That is why उसकी when आत्मा फिर Shishupal कृष्ण के died, अंदर समा गई, उसे मुक्ति his मिली। he got जो liberated. हेलना के साथ नाम लिया उसको भी मुक्ति मिलती है, So a और जिसने person शुद्ध नाम लेगा उसका क्या होगा? कृष्ण को who गाली देकर भी उनका नाम लेता है, is तो भी वो नामाभास से rebuking the कंसीडर करता Lord है। and yet get इस liberated, प्रकार से then imagine the अब बहुत सारी बातें हैं, benefit of chanting the holy कहता names हूँ फिर without अभी आप मुझे offense. याद कराना, इस पर हम कथा करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, श्लोक और There are ऐसे। quite a few things लेकिन that इस we can प्रकार से discuss. सेकंड We'll कैटेगरी है do it नामाभास। later. So this is the फिर second इसके बाद है category. कि नामाभास के क्या लाभ है। तो Then there 7 comes what are the benefits of this कैटेगरी में namabhas, ये कहे गए कि which is नामाभास mentioned in Harinam केवल Chintamani. नामाभास से व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है। Even by namabhas, a नामाभास person से can वैकुंठ पहुंच reach सकता the है, eternal abode of the लेकिन Lord, प्रेम नहीं जन्मा, गोलोक वृंदावन और व्रज but भक्ति not शायद प्रेम नहीं दे the सकता। उस व्रज भक्ति Goloka. के लिए, व्रज प्रेम के लिए हमें शुद्ध To नाम get लेना the पड़ेगा। love of the इसे Lord or the फर्स्ट eternal क्लास, abode of the फर्स्ट Lord, that क्लास is the नाम Golok कैसा है, Vrindavan Dham, स्क्रीन में we आप need to देखिए। have pure chanting. अन्या भिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ज्ञानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम शीलनम भक्तिरुत्तम। यह है शुद्ध नाम। इसमें भी So बहुत सारा this is लगेगा, लेकिन केवल ट्रांसलेट कर दूं। the, शुद्ध let me नाम का translate this अर्थ है verse. जिस What नाम is को the लेने के pure पीछे chanting? अन्य Where अभिलाषिता शून्यम, the chanting of the किसी holy प्रकार names की is कामना without न हो, किसी any प्रकार की expectation or अभिलाषा न desire. हो। अन्य अभिलाषा माने कोई भी अभिलाषा Abhilasha नहीं होनी means चाहिए। desire. हरि So you नाम should में have no रमते desire रहो, while हरि नाम chanting the में holy रमते names. रहो। सो We should chant the सारी holy names only सारी for इच्छा कामना chanting सब the holy खत्म। names. एक और दूसरा ज्ञान और First, कर्म, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ऐसा नाम जिसमें ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग and से the अनावृत है। chanting where और the gaining the knowledge or अनुकूल्येन working, कृष्ण, वो कृष्ण के अनुकूल हो। नाम तो everything किसने भी लिया था, should be नाम तो हिरण्यकशिपु ने, रावण ने भी in खूब राम जी का नाम लिया था। रावण कितनी बार राम जी का नाम लिया होगा? ये सब भगवान का नाम लिए, लेकिन anukul, अनुकूल भाव से नहीं लिए, प्रतिकूल भाव से लिए। हमें नाम that लेना is है अनुकूल भाव से। अनुकूल भाव कब होगा? जब not in भगवान से संबंध opposition जोड़ेंगे, towards the और Lord. संबंध जोड़ने के बाद नाम When लेंगे we have a तो relationship अनुकूल with the होगा। Lord and then we chant the holy तो names, संबंध that जोड़कर means नाम लेना, anukulanam. सारी अभिलाषाओं से मुक्त हो जाना, And when we are free of और our किसी भी desires देवी देवता or यहाँ वहाँ expectation, कोई आश्रय नहीं। जैसे and द्रौपदी ने एकमात्र not taking कृष्ण का any आश्रय surrender लिया, of any of the demigods, और just उसे surrendering मात्र only कृष्ण to the को ही one Lord, that आश्रय is कर Lord लेना, Shri Krishna, यह शुद्ध नाम। that is और the ऐसे pure शुद्ध नाम chanting. का जाप करने से And chanting the holy कृष्ण names in such a प्रेम, manner, we will कृष्ण प्रेम achieve प्राप्त the होगा। love, pure love, लास्ट में loving इतना ही, devotional service towards the और Lord, that हमें is प्रश्न Krishna होगा Prema. कि यदि हम So you थर्ड might have कैटेगरी a में है, question सेकंड कैटेगरी में that है, if we are in the third और or हमें second फर्स्ट category कैटेगरी में आना and we चाहते हैं, want to go to reach the first तो तीन चीज category, करनी है। then what should we do? एक, So there are three things that we need to यदि do. अन्य अभिलाषिता कैटेगरी में आना है तो शुद्ध भक्तों का संग करना है। So if you want to केवल come हरि into नाम करोगे काम the नहीं बनेगा, बस नाम category करोगे काम
of no expectation from the chanting, then we should associate with devotees and chant with them, and we should follow what they are guiding us. And by that, we will achieve the knowledge. Second, we should avoid people who do offenses against the Lord. We should keep a distance from such people. Without hurting them, we should keep a distance from them. And under the guidance of exalted devotees, then we will achieve the pure devotional service towards the Lord. So let's chant and dance and move towards the Bhagavatam. राधे मेरी स्वामिनी. The Lord and Bhagavatam, all the devotees, especially the exalted senior devotees of the International Society of Krishna Consciousness, who have specially decorated this katha, and I heartily welcome that the devotees who have gathered in huge numbers from all parts of the world, all the listeners, and in particular, I would like to welcome the organizers who have taken the shelter of the holy names to achieve the pure loving devotional service towards the Lord in reverie of their ancestors, the residents of Delhi, Bharat, the Bharadwaj and Vashisht family. So let me remind ourselves of their pious ancestors, Lakshmi Narayan ji, Devi, Indra Singh ji, Uma Devi. By taking their blessing, Shri Ramvati Mata, Rajesh Prabhu, Suman Mata, Sanjay ji, Saroj ji, Naresh ji, Seema ji, and all the kids, I welcome you all on the last and the seventh day of this beautiful Bhagvat Katha, and our humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. Today is a highly auspicious day. Asha Sharma Mataji from Delhi and President of America, Monica Mataji. And so the son of Asha Mataji, or the brother of Monica Mataji, Gaurav and Shreyasi, has marriage anniversary today. So they have completed 4 years. So we all pray that you always remain happy and make your mother happy and follow the principles of Shrimad Bhagvat Gita and make a pious
married life. और साथ ही That साथ is our prayer at the lotus feet of the Lord. And मित्र the residents of California, our friends, वैसे होते ही हैं, Om आपको दिखाई Chaddaji, दे रहे हैं। usually he is अच्छा there, ओम चड्डा जी और सुधा जी नहीं है and तो Sudhaji, इनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। they are जय they हो। also have their marriage anniversary सो today. बहुत जल्द कैलिफोर्निया में So भागवत कथा होनी है। very soon we will be having a प्रभु जी की तैयारी है। Bhagvat Katha in California. सो इनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपको भी भूरी भूरी धन्यवाद, So we शुभकामनाएं congratulate और आगे you भी as well, भक्तिमय and वैवाहिक जीवन के लिए we pray that you have a महामंत्र के साथ। हरे centered कृष्णा married life. कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भागवत कथा में आने से कितना लाभ होता है। So this is the benefit of coming to Bhagavatam Katha. 5-7 So लाख फेसबुक पे, almost 2.5 1 lakh लाख में people 10 लाख भक्त एक and गृहस्थी के लिए महामंत्र बोले, almost 10 10 lakh लाख people महामंत्र हो जाते हैं। chanting the Mahamantra ऐसे for अगर these महामंत्र किसी families. भक्त को मिल गए तो फिर उनका जीवन And if they धन्य get the हो benefit जाता of है। 10 lakh ये साधु chanting, संग then की ये the life लाभ becomes है। great. इसी That से is the तो benefit of having हमारे शास्त्रों में association of महाभारत कहा devotees. गया है। That is why ये it's तो बड़ी mentioned again and कठिन again in है, Shastras or scriptures that लेकिन although it is सत्संग tough, यदि प्राप्त हो जाए but तो yet अमोघ है, if we get the फल देखने को association मिलता of है। devotees, then समय it बहुत कम है never gets और आज ineffective. आप It's लोग always इतने effective. भर भर कर The लिख कर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ आप सबके भाव time is very हैं, less, अनुमोद हैं, and you all व्यक्त have करने हैं। एक्चुअली huge सात्विक स्वभाव preparation आपका ही होना चाहिए, to मैं तो फालतू बातें appreciate. बोल रहा हूँ। So the 7 days should be सो of the एक्चुअली listeners. भागवत I'm की just परंपरा है speaking और मुझे 11 unnecessarily, it seems. श्रुति फल कंप्लीट करने हैं, So my goal is to मेरा संकल्प finish है। 11 Shruti सो भाई Phal or 8वें श्रुति फल benefits. कब है That is, राजेश जी? આપણે યજમાનને જ પૂછીએ ને, બીજાને શા માટે પૂછીએ? so let's ask the host, what is the 8वें number श्रुति of the फल Shruti Phal जो that है we were discussing? सर्वश्रेय, जिसकी चर्चा That कल is Sarvashray that we फिर discussed से yesterday. श्रेय माने कल्याण, Shray means आध्यात्मिक welfare. कल्याण और भौतिक कल्याण, So the ये दोनों spiritual प्रकार के and कल्याण प्राप्त material होते हैं benefits. So these two यदि हम ध्रुव चरित्र सुनते हैं। are taken care of if you श्रीमद् listen भागवत to के 14वें the स्कंद के pastime of Dhruv Maharaj 8वें अध्याय से लेकर in the fourth 12वें canto, स्कंद के 12वें fourth, अध्याय तक है। eighth chapter till 12th सो इस chapter of Shrimad Bhagavatam. 8वें स्कंद से 12वें स्कंद की हम संक्षिप्त चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से मैत्रेय मुनि ने भागवत में ध्रुव So we चरित्र were को discussing about अद्भुत Maitri ढंग Muni से who has sung the glories of रसोत्तर Dhruv ढंग से सुना Maharaj. कि ध्रुव महाराज We heard कैसे yesterday उनके that मन में Dhruv Maharaj संकल्प दृढ़ संकल्प था। came out of his house and और जब he had संकल्प दृढ़ होता है firm हमें सत्य conviction, शुद्ध गुरु की प्राप्ति होती है। sankalp. यदि आप मन में So when you have कुछ नहीं चाहिए, मुझे strong कृष्ण conviction, then you चाहिए, will find the perfect तो फिर वो bona fide कृष्ण spiritual प्राप्ति master. की When व्यवस्था you कृष्ण को have ही करनी the पड़ेगी। conviction or फिर desire बाद में कृष्ण to की have जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं कोई सेवक Krishna, भेजूं, then it's Krishna's इससे कृष्ण responsibility का to मिलन हो send और इनको मेरी the प्राप्ति हो। bona fide लेकिन spiritual संकल्प master दृढ़ in the होना path of चाहिए, the devotee. ध्रुव But महाराज जैसा। first, our conviction should be और अगर जब strong, कृष्ण like प्राप्ति का Dhruv अच्छा Maharaj. संकल्प होता है, तब तक तो So मार्ग में माया देवी आ जाती है, for us, कोई अच्छा बिजनेस we मिल have the जाती है, desire, कोई अच्छी जॉब मिल जाती है but कृष्ण बाजू में और then धंधे लग जाते हैं। Maya comes in ये between. हमारा She दोष gives है। us some facilities दृढ़ and we get engaged in material जो दृढ़ sense संकल्प होते हैं gratification. उसे दृढ़ गुरु सदगुरु की प्राप्ति। और दूसरी ओर सदगुरु जो होते हैं वो राह चलते किसी को And a मित्र नहीं बना लेते, person who सदगुरु is शिष्य बनाने a से पहले bona fide spiritual master, he doesn't accept कल इस पर चर्चा the हुई। disciple easily. He मैत्रेय first मुनि ने ध्रुव properly महाराज की test कंडीशन them मानी and then only accept कि them. बेटा तुम
Narad Muni tested Dhruv Maharaj. He said that you are a 5-year-old child, and in this deep forest, any animal can kill you and eat you up. What is the problem you have? He said that my mother didn't allow me to sit on the lap of my father or throne of my dad. Narad Muni said that your father is my disciple. I can convince him and you can sit as much as you want. But Dhruv Maharaj said, no, I don't want his kingdom anymore because my stepmother's speech has broken my heart, shattered my heart into pieces. So I need a greater kingdom than my grandfather's father as well. So if you can guide me, that would be great. But if you just want to do such discussion to put my morale down, then you can take your leave. When Naraji saw that this child has strong conviction, so Narad Muni bestowed his mercy and said that I was testing you. Listen carefully. To achieve the Lord, you should have the perfect place. So the first thing was what Narad Muni directed was that you should go to the banks of Yamuna Ji in Vrindavan's Madhuvan first. Then he said, if you do you really know how the Lord looks? So Dhruv said that I don't know. Then Narad Muni told him about the form of the Lord, and then he gave him the holy names of the Lord, and then he provided the devotional service to to Dhruv. So all these 4 things are provided by a bona fide spiritual master, and when we get it from bona fide spiritual master, then we can achieve the Lord in 6 months. So the problem is that we do perform the devotional service towards the Lord, but we do it on our own whims and fancies. So Guru gives us the form, and then he gives the holy name at the time of initiation. He gives a new name, and it is according to the role or position in the pastimes of love. Then he gives us some service, and he gives us the Harinam to chant. So when we are initiated and we get these things from the bona fide spiritual master, then the bhakti becomes strong. So when Dhruv Maharaj performed austerity for in first month, he was eating the berries once in 3 days. In the second month, he was eating leaves of the trees on every 6th day. The third month, after every 9 days, he used to drink just water. In the fourth month, he stopped drinking the water. He just was taking the breath, and in the 6th month, he stopped even breathing, and he was chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. As you people chant the Harinam without even drinking and blinking your eyes. I will, the, the creators of Zoom come and ask me what's going on, then I'll say that we are purifying your channel.
or application. कि जब कोई व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है, So when someone सबसे ज्यादा performs the आनंद pure किसको devotional मिलता service है? towards the Lord, so धरती who gets माता को the most सबसे ज्यादा आनंद पृथ्वी को ecstasy मिलता है। is पृथ्वी सोचती है कि felt मेरे by करोड़ों लोग हैं, earth. लेकिन She सालों thinks बेचारे that सो जाते हैं, पान खा के there are पिचकारी मार के। crores of people ये सब लोग मेरे ऊपर on बोझ my हैं। lap, धरती but सोचती they है all are कि burden हे on मेरे me वाला लाल, because जो they are मेरा doing जो sinful मेरे मेरे activities. पति वसुंधरा है ना, पत्नी विष्णु And का नाम she is जपती the है, wife of Lord Vishnu, भक्ति so she करती becomes है। जब ecstatic that कोई someone भजन is करता है ना, chanting तो the holy धरती names को of अष्ट her, सात्विक विकार आने लगते and हैं। the earth पृथ्वी gets डोलने लगती है कि affected आहा by क्या the बात 8 signs of ecstasy, है। और ऐसा ही हुआ, ध्रुव की भक्ति से and the माता earth इतनी starts इतनी प्रसन्न shaking हुई, इतनी प्रसन्न or हुई, shivering. Earth यद्यपि got ध्रुव so का much एक पाँव ecstatic भी while पृथ्वी को टच था। Dhruv was ध्रुव जब तपस्या doing कर his रहे थे तो एक austerity, पाँव पर खड़े although थे, his one feet only एक was touching, अंगूठा the धरती पर स्पर्श था, only the लेकिन thumb of ध्रुव his जैसे feet was भक्त के touching शरीर को टच करके पृथ्वी earth, को अष्ट सात्विक विकार and आने लगे। by just that, उस समय the धरती earth डोलने was लगी। मैत्रेय मुनि कहते feeling हैं the जैसे 8 signs of गजराजा ecstasy, किसी नौका में अपना पांव रखे और नौका डोलने लगे, as if ऐसे ध्रुव के a चरण को स्पर्श करके वो नौका elephant की तरफ keeps his डोलने लगे। feet in the boat and the boat shivers. ब्रह्मांड हिल गया। Similarly, the earth उन्होंने was जब shivering, सांस लेना बंद किया ना, and when he सबके सांस stopped बंद हो breathing, गए, then everybody सबका stopped ऑक्सीजन बंद। breathing. कोविड में जो कुछ लोगों के हुए थे, यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड के ऑक्सीजन बंद हो गए। त्राही So there was माम no पूरा oxygen ब्रह्मांड, in the material लोकपाल world, समेत समस्त देवता and भगवान all the विष्णु के शरण demigods में and गए। eternal प्रभु ये associates of हो the क्या Lord रहा है समझ में नहीं आ रहा। went to प्रभु ने Lord कान पकड़ Vishnu के कहा हो क्या रहा है, and said, सालों "What सालों is से तुम going on?" भोगों के अलावा कुछ नहीं So करते, he said ये that मेरे 5 you साल just का do बालक sense 5 साल की gratification बेटी in the जिसने celestial केवल प्रभु planets. की भक्ति My कर करके 5-year-old पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करवा devotee दिया। who is तब तो performing austerity in 6 months has ब्रह्मांड shaken में this whole तारी की world. शक्ति धरे जने जने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे Chaitanya भक्त Mahaprabhu में says that my उस devotees, प्रत्येक भक्त में पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है। every devotee और of ये mine एक has चरितार्थ करके capability to एक purify this भाषण whole देकर world. उन्होंने ब्रह्मांड को हिला And this दिया। was proved ये सब by भाई Dhruv भाग कर उठे, Maharaj. तब भगवान के चरण पकड़ते हैं, प्रभु कुछ कीजिए। और They भगवान गरुड़ ध्वज bow down at the lotus feet गरुड़ of the पर Lord सवार and होकर requested to do भगवान के something. पास आए। Vishnuji came वो to Dhruv गरुड़ पर नहीं Maharaj. गए, भगवान Dhruv never बोलते went to वहां the पे Lord, मुझे तत्काल but बोलते Lord આવું બધું came ભાગવતમ ગાતા to કીધું ને, મને ઉખરાટ આવવા માંડે, ધ્રુવ મહારાજ આવે ને the. એટલે મને અંદરથી કંઈક So થવું when જોઈએ, we છતાંય મેં બહુ talk બેઠો about બેઠો Dhruv Maharaj, મારે આ બધું કરવું છે, I get overwhelmed. लेकिन I'm just अब उस trying to समय slow क्या down हुआ, myself. वहां पर मैत्रेय मुनि एक श्लोक कहते हैं, एक एक पॉइंट कहते हैं, So that time, भक्त Maitre Muni प्रभु says से one point भगवान अपने वैकुंठ से निकले हैं, क्यों अपने भक्त that को देखने Lord के लिए। came और वहां from से Vaikuntha प्रभुपाद to जी अपनी see कलम चलाते हैं, their devotee. And भगवान there को Prabhupada खोजने ji की जरूरत writes, नहीं, ध्रुव you की don't तरह need काम to करो, go in भगवान search आपको खोजते of खोजते आ the जाएगा। Lord. You work like Dhruv भक्त के Maharaj that पीछे the प्रभु Lord को comes in देखने, भगवान search के of मन में you. हो गया कि ऐसे Even the भक्त को Lord, जो 5 साल का वाला, God मैं भी तो desired देखूंगा तो to आखिर है see कौन। Dhruv Maharaj. तो भगवान को भी अपने भक्त का दर्शन करने की इच्छा होती है, और So भगवान even the Lord feels to have the darshan of his pure devotee. और आप लोगों की तरह हरे कृष्ण Dhruv was बोल नहीं रहे meditating ध्रुव महाराज, on भगवान सामने खड़े हैं, भगवान वहां Vishnuji, खड़े हैं। and the मैं Lord was कितनी standing in देर front of तक बात him, करूं, watching him. लेकिन आधा घंटा 1 घंटा He नहीं thought that चलता। if he opens his eyes, यहाँ then पर only भी एक I can सिद्धांत talk to है him. भक्तों, But so कि there is one साक्षात principle भगवान here सामने है, that लेकिन if the ध्रुव को Lord is भगवान there, से ज्यादा आनंद किस but में आ रहा है, भगवान के Dhruv ध्यान Maharaj में, was भगवान के ध्यान feeling the में, pleasure of भगवान chanting के the whole स्मरण में, name, ये holy सब names कुछ and है। meditating on ये them. खाली फोकट And भगवान that नाम is से the हो truth. रहे हैं, भगवान से ज्यादा आनंद तो उनके नाम में है, So भगवान से it's ज्यादा आनंद तो उनके the महामंत्र pleasure में है। is और more इसीलिए तो in हमारे भगवत chanting के the holy संतों ने names. कहा, And that is why the saints of Braja क्या has बोलते हैं, said, वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो
प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमे न सरोज सुधारस में, जो ललाम लता अभिराम में है। कहते हैं कि वो मोद, वो आनंद मुक्ति के Say that the pleasure is not in liberation that is present in the holy Dham Vrindavan. जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमे न सरोज सुधारस में, जो ललाम लता अभिराम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितना छवि सुंदर श्याम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख कृष्ण के नाम में है। The happiness that we get in the chanting of the holy names is nowhere. The Lord is standing, but Dhruva is in ecstasy of chanting the holy names. So, अब भगवान क्या करते, 1.5 घंटा 2 घंटा भगवान का टाइम भी कुछ। So the Lord was waiting. फिर भगवान ने सोचा अब क्या करूं, अब ध्रुव जो अंदर से हरि नाम ले रहे थे और भगवान की छवि को आंखें बंद करके So ध्यान, Dhruva was imagining or meditating on the form of the Lord, and the Lord went in his heart, and then he went inside and he stopped that as there is a signal lost in the television and people get anxious that you die now. अब ध्रुव को सब ध्यान बंद हो So, गया, तब so आंखें खोली। when Dhruv Maharaj's meditation was interrupted, he opened his eyes तो जिस स्वरूप का ध्यान अंदर कर रहे थे, वो and he saw the form of the Lord which he was meditating upon. Lord Vishnu was standing in front of his eyes. और प्रणाम किया तो अब कुछ He बोलना चाहते थे, bowed down at the feet of इसको तो कुछ आता ही नहीं है। the Lord. So he wanted to pray to the Lord, but he समझ गया कि लड़का had no knowledge. And Vishnuji understood his शंख ध्रुव के गाल से स्पर्श किया, desire and he touched his counsel on Dhruv Maharaj's cheeks. And as soon as it touched, he got all the knowledge of the scriptures, Vedas, etc. तो वेदमय शंख स्पर्श हुआ, Because the वेदों का सार ध्रुव का counsel has the potency of the Vedas. And he started saying 12 verses. संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना येनांश्च हस्त चरण चरणत्वगादीन। ध्रुव महाराज बहुत सुंदर एक के बाद एक श्लोक बोलने लगे, सुंदर स्तुति किए। So Dhruv Maharaj did a beautiful prayers of the Lord. And Lord became ecstatic and said that you can ask for whatever benediction you desire. Dhruv Maharaj said that I was ignorant when I started from my home. टेक्निकल सब्जेक्ट सुना ना, वो हरि नाम के विषय में। So, तो ध्रुव ने क्या कहा, जब मैं so Dhruv Maharaj said, when I started from my home, भासी था, क्या था? I was a Namabhasi. नामाभासी। ध्रुव महाराज जब घर से निकले तो शुद्ध नाम वाले नहीं थे, So he didn't had the pure chanting of the Lord, but he took the shelter of the holy names, but he had desire of a kingdom. तब नामाभासी था। मैं स्थानाभिलाषी, नामाभासी, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, त्वां प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याञ्चे। ये तो, लेकिन प्रभु जब मैं आपका नाम लेने लगा ना, But when I started chanting your names, your name has so much potency that my heart got purified by just chanting your holy names. Now I have no desire and I don't see any deficiency. So I don't need anything from you now. So Dhruv, Vishnuji insisted that you should ask for a benediction. But Dhruv Maharaj refused, I don't want anything.
So Dhruvji said that if you really want to give, then हरि भक्तों की संगति मुझे दे दीजिए, give me the association of the pure devotees of the Lord. आपकी कथा That सुनता रहूं, give me a possibility where I can listen to your pastimes क्योंकि प्रभु आपके भक्तों के मुख in से association of the कथा सुनते devotees. हैं, उस Because कथा if का प्रभाव someone नशे के समान, listens your proclivity और from a devotee, then हमेशा that is कहते हैं intoxicating. तमाकू चूतरा उतर जात प्रभात, ये भांग जो पीते ना उसका नशा कब तक होता है, रात So में पी the सुबह उतर जाता है, intoxication तंबाकू of का नशा other कब तक material रहता है, things वो is सारा temporary. होता है। तो भांग तमाकू शराब उतर जात प्रभात, सुबह होते उतर So जाती the है, effect of alcohol or smoking, etc., रहे दिन रात, is for लेकिन or नाम का night. नशा, But हरि the कथा का intoxication of नशा the holy names रात or दिन चढ़ा, the pastimes of the Lord is और उस अवस्था में prevalent throughout day and night. चिंता दुख आदि नहीं सताता। सो प्रभु And in this आप मुझे stage, we never get आप मुझे distressed or anxious. सत्संग दे दीजिए, आपकी संगत So में please सत्संग में provide कथा me सुनूं, association of the इस devotees. प्रकार से ध्रुव महाराज का चरित्र जिसका श्रवण करके So सर्वश्रेष्ठ this way, प्राप्ति होती है। by listening to अब the अगला Dhruv चरित्र, अगला श्रुति फल, pastime, we can ध्रुव achieve महाराज Sarvashreya. का श्रुति फल है। So the ninth श्री सुखदेव benefit or गोस्वामी Shruti कहते हैं, Phal अनुदिनम is आदरेण शृण्वन् पृथु चरित्रम प्रथयन विमुक्त संग भगवती भव सिंधु पोत पादे सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्य। ज्यादा विस्तार करने का समय नहीं, लेकिन चौथी लाइन केवल सुन लीजिए। so let's listen to the fourth line. A person who gets the benefit of love towards the lotus feet of the Lord, who listens to the pastimes of Prithu Maharaj. And this is the ninth Shruti Phal. And this comes in the fourth canto, 15th chapter to 83rd chapter of Srimad Bhagavatam. 23rd chapter, sorry. As we heard about Dhruv Maharaj pastime, so Dhruv Maharaj had two sons, Utkal and Vatsar. Vatsar, the elder, had 6 sons, and first son was Pushparna. So Vishnu to Brahma, Manu, then Utanpad, Dhruv, Vatsar, and Pushparna. And his son was Vyushta. And his son was Sarvatejas. And his son was Chakshu. And his son was Manu. And his son was Utlabhuk. And his son was Maharaj Ang. The pastime of Ang can be performed for 7 days. So he was in the clan of Dhruv Maharaj. Ang married Sunita, who was the daughter of death personified. And they begot a son, Vain, and who has the qualities of his grandfather, maternal grandfather. He was sinful as Dhundukari, and his father Ang died, and he got the free reins. And as the kingdom became
uncivilized. बंदर वैसे ही उछल कूद करते हैं, ऊपर से दारू पाए दो तुम, ऐसा ही हुआ। He was intoxicated with the power, और इतना and उत्साह he उसको था, started to ऋषि मुनियों से torturing the citizens. साधु संतों की Even साधना the saints कुछ were गड़बड़ कराने लगा, disturbed पृथ्वी के and ऊपर were अत्याचार not करने allowed लगा। to perform austerity. और ऋषि मुनि ये देख नहीं पाए। एक The दिन ऋषि मुनियों ने saints पाप couldn't कर tolerate it further, इस अंग के पुत्र वेण का वध and कर they दिया। cursed him, and he फिर से died. अराजकता छा गई। And then और ऋषि again, मुनियों ने उस the वेण के citizen, शरीर का the मंथन kingdom किया, जिससे became आधे अंग से पृथु महाराज haywire. और आधे अंग से अर्ची देवी का जन्म हुआ। और ये पृथु So और from his अर्ची body, भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट हो गया। Prithu श्लोक में and वर्णन his किया, wife were गुणवान manifested, पृथु and चरित्रमृत this Prithu ध्रुव is नारद की इस परंपरा an को incarnation of Lord Vishnu भगवत कथा himself. यदि कोई सुनता है, And if somebody तो listens to भगवत his भक्ति, pastime, भगवत प्रेम को he प्राप्त gets करेगा। the pure loving devotional service towards the महाराज Lord. पृथु की कथा भी बहुत विशाल है। So the अब पृथु pastime महाराज of जब Prithu राजा Maharaj बड़े is हुए quite तो long. देखा कि When उनके he अपने आप grew ही up, शरीर सूखे जा रहे हैं। and he saw that और फिर उनको his कारण पता चला कि वेदों के citizens अत्याचार से पृथ्वी ने were अन्न औषधि देना बंद कर दिया। getting weaker and अब क्या weaker करते, day by day, एक दिन पृथ्वी की because the देवी earth was not giving any fruits. गाय का So, रूप बनाकर दौड़ी, so earth had पीछा किया। taken the form of a cow, and she was running, और and फिर Prithu Maharaj was following her closely. पृथु महाराज ने गाय का रूप धारण की हुई पृथ्वी का दोहन किया, और And जिससे सारे then वेद और he औषधि पुनः स्थापित हुए, cowed पृथ्वी this सूखी नहीं। milk, cowed और this महाराज earth, पृथु ने अश्वमेध and यज्ञ got का रूप all धारण the किया। elements to 103 make 4 the करते करते kingdom 99 अश्वमेध well यज्ञ again. समाप्त किए। And he इससे स्पष्ट performed दिखाई दे, प्रभुपाद जी आ 99 जाओगे। Ashwamedh और Yajna जब or 100 fire अश्वमेध यज्ञ sacrifices. चल रहा था ना, When he was इंद्र about to प्रसन्न perform हो the गए। 100th अरे बाप रे, Ashwamedh 100 Yajna, अश्वमेध यज्ञ तो Indra होगा got bewildered. और फिर मेरे He श्लोक thought में that आ जाएगा, मुझे if कुर्सी खाली he करनी पड़ेगी। finishes the 100 भक्ति Ashwamedh कितना Yajna, then सुंदर है। I will इंद्र have भी to परेशान। vacate my position and give it to 100 him. अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो इंद्र उस यज्ञ में बाधा So, देने लगा। so Indra tried to ब्रह्मा, आंधी, disturb ओले, तूफान। this sacrifice और of पृथु Prithu Maharaj. पृथु महाराज यज्ञ में बैठे थे, उनकी पत्नी बैठी थी, ब्राह्मण ऋत्विज सब बैठे And थे। पृथु महाराज खड़े हुए खड़क से तलवार खींच ली, बोले Prithu मैं नहीं Maharaj छोड़ूंगा। stood up कौन and है ये? बोले इंद्र, मैं इंद्र को नहीं took छोड़ूंगा। out his ऋषि sword, मुनियों ने कहा, and he said महाराज that I will not ये leave कौन him. है? Who is he? He said that यज्ञ this में is Indra. क्रोध So करोगे the तो same यज्ञ अधूरा रह जाएगा, sadhu said शांत that रहो। ये you सब should बातें not हुई। be angry while performing ब्राह्मणों a ने अपने yajna. मंत्रों के Let us handle this. इंद्र को So खींचकर नीचे with the गिरा दिया। potency of the मंत्र के बल mantras, पर इंद्र को they खींचा। pulled Indra down. और पृथु महाराज को कहा क्या करे इसका, बोले इसको हवन कुंड में होम दो, And दो then तीन लकड़े कम he रखना, said that ये what जलेगा should we do? दोनों काम हो जाएगा। तो He इंद्र ने said that we जैसे ही should डाला, put him in the fire sacrifice. भगवान But विष्णु as they were about to put रूप him धारण, in the भगवान fire, विष्णु जब प्रकट हुए, Vishnu, यज्ञ तो विष्णु के लिए Lord था, Vishnu manifested. यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान So, विष्णु ने as the पृथु महाराज को पकड़ sacrifice के was being performed for Lord Vishnu, and when he साइड manifested, में ले गए। the yajna is और considered वहां पर complete. So, पृथु Vishnuji महाराज told कहते Prithu हैं, Maharaj, ये इंद्र को छोड़ दो, do one, do you just leave Indra alone. गलती मेरी है कि इंद्र Prithu जी, Maharaj says that भगवान विष्णु कहते हैं whose ऐसा fault नहीं है, is गलती it is? इंद्र की है। Vishnuji says इसलिए that the आपको fault इंद्र से is of बोलना चाहिए कि Indra. इंद्र को समझाना चाहिए। Then whether और you भगवान should, कहते हैं कि जो समझदार है ना उसे समझाना चाहिए। भक्तों ये so भागवत should I, इसे मैंने shouldn't he be chastised? So Vishnuji said कोई that पागल और बुद्धिमान यदि we should झगड़ा करे, teach a person who is intelligent. So if कोई मूर्ख पागल और a बुद्धिमान mad का झगड़ा होगा man तो कौन and जीतेगा? an intelligent person are मूर्ख ही fighting, जीतेगा, then who will मूर्ख ही win? जीतेगा। The, अच्छाई और बुराई the की fool लड़ाई will में win बुराई जीतती है, in ये बात याद रखना। the battle और मौत सिर्फ between good समझा and bad. जाता है जो Always समझदार होता है, पागल को bad, कौन समझाए? because you can कई बार हमारे गुरुजन
teach or explain to person who is intelligent. That is the reason our seniors try to tell us. So if there is a misunderstanding between husband and wife, and if the husband is intelligent, he will give it up. A person who is intelligent will give up. So this is not defeat, but to give up in the relationship is in the sign of intelligence. We are defeated because we don't understand the value of relationship. Because if there is a disturbance there, then that gap cannot be fulfilled. So an intelligent person always takes the step backwards and goes down. And his bowing down is equivalent to his victory. So if there is a fight between a 5-year-old child and a father, so father can win by just slapping him, but respectability is for both if the father loses with from the son. So if we so if you even try to win with fools, then what will you achieve? So you should always put them forward. So Bhagavatam teaches us so many principles. There are so many things that should be discussed, but I'm in short of time, but you are very intelligent. So Ritu said that who should you teach? He said that because you're intelligent, that is why I'm trying to explain it to you. So the Ritu Maharaj said that I was not performing this yagna sacrifice for gaining the celestial planet Swarga. Vishnu was satisfied and said that you can ask for a benediction. When this was said, Ritu Maharaj said, O Lord, I know that whatever I desire, you will provide me, but I don't desire anything from you. But if you want to give, then give me the nectar of your lotus feet, that is your pastime. And to listen to your katha, these 2 years are insufficient. So please provide me 10,000 years so that I could listen to your pastimes eternally, forever, for eternity. And in this way, he got the benediction from the Lord. And a person who listens to this pastime receives the love of the Godhead. So let's move to the next, that is the 10th fruit. श्रावयेत मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधन है। इदम यह, ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, So whatever I'm sharing with you now, if you fold your hands in the morning and with faith, Shraddha, that is faith, Pranjali means folded hands. So there is a Rudra Geet. The glory is sung by Lord Shiva himself. And if someone listens to or speaks this Rudra Geet,
in the morning with folded hands, then he will be liberated from the bondage of the karma or the deeds that we perform. If we want to get liberated from all our karmas, then we should sing Rudra Geet. This is in the fourth canto, 24th chapter, from first verse to 33 verse number. It is a song sung by Shiva himself. And this Rudra Geet pastime we will discuss from tomorrow. You can see it in YouTube tomorrow. It will be premiered live so that we can destroy our bondage of the karma. So the 11th Shruti Phal or the benefit देवर्षि नारद के द्वारा एक आख्यान सुनाया गया. So there was a pastime said by Narad Muni. If somebody listens to that someone, then he gets liberated from the bondage of this material body. So that is Jivan Mukti or liberation from the repeated cycle of birth and death, and will achieve the Lord eternally. And that is Puranjan Upakhayan, which is in the fourth canto, 25th chapter to 29th chapter in Srimad Bhagavatam. And if someone listens to this, then he gets liberated from this material body. So we heard about Prithu Maharaj. So Prithu Maharaj had 5 sons, and the eldest was Vishwajit. His name was Vijitashva. And he had 2 wives, Shikhandini had 1 son, Prachin Barbari. And he married Shraddhuti and got 10 sons, and they were the So Muni came to Prachin Barhi to deliver him, and for that he shared the Puranjan pastime to him. You can see in your backdrop, in my backdrop. So let's listen. Listen carefully. You need to understand each and every character. This can be 7 days katha, but so there was a person named Puranjan and his best friend. His name was Avigyat. Avigyat means that is why its name Avigyat. But they were the best. He was best friend, and they used to stay together, and they used to enjoy their life. But some people became envious of their relationship.
one day Puranjan मुझे है ना थोड़ा सा विचरण करना है। to मैंने कहा छोड़ दो roam भाई, around हम here. यहाँ पर आनंद कर रहे हैं, खा पी कर मौज मस्ती Vigyat कर रहे said हैं। that बोले नहीं नहीं, मुझे there is थोड़ा no सा need. घूमना फिरना है। But he said, no, no, I just want to roam around a विद्या little. ने बहुत मना Waiting come. बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। पुरंजन निकला He घर से, promised that I will come back. अपने बेस्ट फ्रेंड अविज्ञात को छोड़कर घर से निकला So और Puranjan बहुत went, घूमा, leaving अनेक Abhigyat. अनेक नगरी, पूरी, अब पूरी शब्द भी याद रखना, अनेक पुरियों में गया कि So एक he दो went to करते many करते places करते करते करते, लेकिन कोई पुरी उनको अच्छी नहीं लगी। and he didn't like बहुत any सारी of these पुरियों में puris. घूमा, पुरी माने नगर He होता है, roamed around so लेकिन 9 many दरवाजे वाली cities, एक पुरी, 9 Nagar द्वार or जिसको Puri, लगे थे, ऐसी एक पुरी उसने देखी but then he saw और वो a उसको Puri बहुत which has 9 लगा, doors बोले ये तो बहुत and अच्छा है। he enjoyed there. और 9 He liked it दरवाजे very वाली much पुरी में वो रुक गया। and he stayed there. जैसे ही 9 द्वार वाली पुरी में गया And उसको एक बहुत maiden, कन्या को पूछा आप and कौन he हो? asked her, बोले मैं इस who are you? पुरी की मालकिन हूँ। She said that I am the अच्छा तुम owner इस of पुरी की this मालकिन यहाँ पर क्या कर रही city. हो? So he said, what are you बोले doing मैं here? पति खोज रही हूँ। She said that I'm looking for a good तो husband. पुरंजन ने कहा कि मैं भी लड़की खोज रहा हूँ, Ranjan said तुम that बहुत even अच्छी I लग am रही हो। looking for a उसने कहा girl मुझे to भी तुम marry. बहुत अच्छा लग रहा है, So दोनों they की both शादी हो said गई। that we have liked each other. अब So they got married. उस 9 द्वार वाली नगरी में अपनी So पत्नी के in साथ, this, उस पत्नी का नाम भी रख दिया पुरंजनी। ये so पुरंजन his पत्नी का wife's नाम name was रख Puranjini, दिया। or she was named Puranjini, and शादी हो गई they started staying in this city और शादी of हुई। 9 doors वो or जो gates. मित्र बेचारा राह देखा था वो घर So पे, the friend who was उसको waiting, भूल गया। वो अविज्ञात जिसके साथ उठना बैठना Avigyat, था वो उसे भूल who गया। was his dear वो अपने friend, सब तो पत्नी को Puranjan खा has गया। forgotten about him completely and started अब enjoying पत्नी here. दुखी तो ये दुखी, पत्नी खाए तो ये खाए, So पत्नी रोए if तो ये his रोए। wife, और whatever पत्नी the जो mood his कहती wife है had, वही करता he रहता also है। felt the same. He used to do एक everything एक that बात his तो wife चल रहा था इस used to tell प्रकार से him. पति पत्नी का। दूसरी ओर क्या हुआ, On the other hand, what जरा happened? नाम की एक भयंकर कन्या थी। There was विलंब करना चाहिए इस पर तो। जरा नाम की एक a भयंकर कन्या थी demon, Zara, और वो शादी करना चाहती थी, and she लेकिन wanted to उसके marry, साथ कोई शादी करना नहीं चाहता था। but Puranjan didn't want to marry her. जिस किसी पुरुष के पास जाए वो Oh, उसके nobody साथ wanted शादी to करना marry चाहता, her. कोई भी पुरुष उस जरा नाम की कन्या के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं। एक दिन उनका मिलन So चंडवेग one के day साथ हुआ, मतलब एक she met कड़वा जैसा Chandvik. कोई था चंडवेग, चंडवेग के साथ उनकी उनकी मुलाकात हुई। बोले देवी तुम परेशान, बहन तुम परेशान हो? बोले He हाँ। said that बोले क्या you परेशान है? worried. बोले मुझे शादी करनी है और कोई She पुरुष said मेरे that I साथ want शादी to करना marry, चाहता but नहीं। nobody is agreeing to marry me. चंडवेग ने कहा कि तेरे साथ So शादी कौन Chandvik said, करेगा, अपना चेहरा दिखा। who would marry you? नहीं Have नहीं you seen your मैं face? शादी करना चाहती हूँ। बोले He कोई said, बात नहीं, brother, I want to प्रेम marry. से So तो he तेरे said, से no कोई शादी problem. करेगा नहीं, By love, लेकिन nobody मैं is तुझे going एक to agree सेना to marry देता you. हूँ, But ये let me give you सेना an लेकर army. जिससे साथ शादी करनी उस पर चढ़ाई कर देना। You go with the army and defeat the person whom you want to marry, ये बात and है। then you marry them. तो चंडवेग ने अपनी Him. सेना दी। So Chandvik वो gave सेना his काले army और गोरे सैनिकों की सेना थी। who were कौन से? black and white. काले, ये सब कैरेक्टर याद रखना क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व है। So we need to काले understand और and गोरे remember all these सैनिकों की characters. सेना प्रदान कर दी कि सेना ले जाओ, और बहुत सारे काले गोरे सैनिकों की सेना लेकर And जरा with नाम की इस this कन्या ने क्या army, किया, this Zara अपनी named जो पुरी girl थी उस पर चढ़ाई or कर maiden, she went to Puranjan's और city पुरंजन तो पुरंजनी के and साथ fought. भोगों में मस्त था। And वो he तो दिन में was ऐसा busy भोग रहे in थे और अचानक enjoying जरा sense नाम की इस gratification with कन्या his ने wife काले Puranjani. और गोरे सैनिकों को लेकर हमला बोल दिया And this Zara और attacked the पुरंजनी kingdom और or पुरंजन city of दोनों Puranjan. जरा देवी के बंधन में बंध गए। And अब these two पुरंजन रोने लगा, got मुझे छोड़ bonded दो, by उसे मैं Zara. चाहता नहीं था, मुझे छोड़ दो छोड़ दो।
Puranjan requested that please leave me, but Zara wouldn't leave him. And Puranjan left his body. And because his mind was in his wife while dying, so because he was contemplating on his wife while dying, so he became a woman in the next birth. And then he married with a man, and and whom he married as a woman. The husband died, and she became a widow. And she was about to f- enter the fire, and as soon as he was about to enter the fire, his friend Abhigyat came in search of Puranjan and saw him as a woman and about to jump in fire. He stopped him. What are you doing? Puranjan said that, who are you? I don't know you. Abhigyat said that we were friends. Then he remembered, and then he said that we were in so much enjoyment, yet I got stuck in this situation. So Avigya told him that you leave everything behind and come with me. And they both started to live together and enjoy themselves. So this is what Prachin Bari was telling Narad Muni. And Narad Muni asked, have you understood? So he said that I understood. ev- I heard your katha, but I couldn't understand anything. So please tell me the essence of this katha. So if you have heard it properly, then you will understand the essence or element. Let me reveal it. So this Ranjan is us, the living entity. And the Abhigyat, the best friend, is Paramatma, the Lord. So we and the Lord stay together and enjoy ourselves in eternal abode of the Lord. But the Jiva, the living entity, gets a desire to come to the material world as Puranjan wanted to go, and Avigyat was stopping him, but he didn't hurt him. And he left the Lord and came. So Avigyat, what did he say? That if you're going, then come back soon. And Puranjan said, yeah, come back. So, so as Puranjan left his friend, similarly we have left the Lord. And these Puris are 84 lakhs of species. He changed from one body to another, but he couldn't enjoy. And finally, he got the body of a human. The human body has 9 holes. बोले ये रहने लायक He है. liked, and he started staying there. And as soon as he stayed there was the owner there. And who is that? Who is this maiden? That is Buddhi, our intelligence. So a person does whatever the intelligence tells him. Like the wife controls her husband.
he started staying with his mind and enjoying senses. So the Jara named demon is old age. जैसे जरा नाम की कन्या शादी तो करना चाहती लेकिन उनके साथ कोई So शादी करना नहीं चाहता था इसका मतलब क्या हुआ nobody wanted to जब marry उनके her साथ कोई शादी करना नहीं because चाहता that nobody फिर wants to be कौन है old. जो बूढ़ापा चाहता है जो बुढ़ापा Nobody को सहन desires कर to be सकता है old. सो जरा नाम की कन्या से बुढ़ापा कहते कोई बुढ़ापा नहीं चाहता कोई शादी करना नहीं चाहता फिर चंड वेग के पास गई ये Then चंड वेग she का went to नाम है काल Chandveg. So the चंड Chandveg वेग है is काल Khal, चंड वेग ने the अपने time काले itself. और गोरे सैनिक दिए सफेद और काले So he काले और gave सफेद सैनिक black and दिन और रात white soldiers, that is सो day दिन and और रात night. रूपी सैनिक को लेकर जरा बुढ़ापा ने पुरंजन की पूरी के ऊपर And with हमला this, बोल दिया she अब ये तो बहुत attacked मस्त था this इसको तो पता भी नहीं Jiva चला or कि man. बुढ़ापा वो हमला कब हो गया अचानक से हमला हो गया He couldn't even बहुत से understand लोगों that को when he was सबको attacked, पता है we मैंने all जो know that इसकी we are going डेट to die. सबको पता है लेकिन एक आदमी बता दीजिए जिसको बुढ़ापे की डेट पता हो So we all know कि इस that तारीख को मैं बूढ़ा our हो गया date of birth अरे or ये marriage, बुढ़ापा but अचानक से can आक्रमण कर गया anybody पुरंजन की पूरी tell पर that ये जरा रूपी कन्या when ने we are going अचानक to से get आक्रमण old? कर दिया It attacks suddenly. और जैसे ही आक्रमण अब तो भागवत के श्लोक के अनुसार चले तो ये कहाँ तो बड़ा रस है दृष्टि नश्यते वर्धते च बधिरता दशनम विहीनम वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना श्रीमद् भागवत जी में तो बहुत इस प्रसंग को बिल्कुल सजाया लड़ाया Srimad Bhagavatam ji has this जैसे ही जरा decorated. मतलब बुढ़ापा का आक्रमण हुआ आंखें देखना बंद कर दी कान As soon सुनना as he बंद was कर दिए attacked, मुखम his विलालायते all senses लार became गिरने लगी कान slow, सुनना बंद कर दिए इस प्रकार से बुढ़ापा आ गया and और ये the बड़ा old age आसक्त था came. अंत में And इसका as he was फिर attached, दूसरा जन्म हुआ then he took another इस birth, प्रकार से परेशान और अंत में उसका मित्र खोजते खोजते उनके पास and आया then the तो Paramatma वह मित्र or the कौन है friend वो है came in परमात्मा search of him. परमात्मा स्वयं गुरु के रूप में The साक्षात Lord स्वयं himself के रूप में हमारे पास आया manifest in the form जब of हम a बोलते हैं bona कि fide spiritual कहाँ पैदा master हुए हो पुरंजन तो पहले तो who पुरंजन give कहते us हैं कि the हमको real नहीं knowledge पता ऐसा and ही tell होता that है you're साधु stuck संतों here. को है ना नकारते हैं हम We ऋषि मुनि को reject the saints फिर उसके and the मित्र ने spiritual बहुत masters. याद कराया ये याद क्या है ये भागवत कथा ये भागवत So कथा सुना remembering सुना के याद is कराया जाता है कि listening the Bhagavad Katha again and again to make you realize that who am I? हम हमारी पहचान छोड़कर भूलकर बहुत Like दूर आ जाते Puranjan, हैं we have lost ये जहां पर हम लोग रह रहे हैं ये हमारा डेस्टिनेशन our नहीं है position, इस knowledge of प्रकार our से position. अभी The क्या place we are याद here कराया वैसे is not our ऋषि मुनि eternal जब याद position कराते or हैं permanent फिर जब याद आ position. जाता है तो फिर But when we संसार के remember भंवर में this, वापस चले so जाते हैं then we और go अपना back घर to अपना the आश्रम पाते eternal हैं abode of the Lord, तो जैसे ही अपने Vaikuntha. घर में पहुंचे तो आनंद आनंद हो जाता है And ये when we हमारी reach back to our अनसंग home, सुखों की we जर्नी become ecstatic इसलिए and ऐसे happy सत्संग करो forever. भगवत कथा सुने और So अपना जीवन we should धन्य listen करें to the Bhagavad इस Katha. भागवत कथा के दौरान श्रीमद् And भागवत during में this श्रीमद् Katha, 11 श्रुति फल की we चर्चा heard हुई about the 11 श्रुति benefits of फल Srimad में Bhagavatam. Let me आत्मदेव की repeat. कथा सुनने से पितृ तृप्ति होती Atmadav, है पांडवों Brahman, का निर्वाण सुनने से Pandav ब्रह्म मुक्ति Nirvan, प्राप्त होती है देवताओं की उपासना सुनने से सर्व सिद्धि मिलती है Sarvasiddhi ब्रह्म by सूत्र Devata का श्रवण Upasana, करने से भगवत प्रसन्नता Brahmastuti, प्राप्त होती है Bhagavad Prasannata or रामायण happiness, वध सुनने से आयुष्य की वृद्धि Hiranyaksh, होती है सांख्य death, तत्व दर्शन we भगवान के get गुण गाथा longevity. सुनने से भगवत प्रीति प्राप्त होती है शिव और सती चरित्र सुनने से Shiv, पाप Sati नाश Charitra, होते हैं ध्रुव चरित्र absolve सुनने our से sin. सर्व श्रेय की Dhruv प्राप्ति Charit होती है gives of पृथु चरित्र का all श्रवण welfare. करने से भगवत प्रेम Prithu Charit ध्रुव gives चरित्र का श्रवण love करने से for Lord. कर्म बंधन का नाश और पुरंजन चरित्र का श्रवण And करने से Puranjan Charitra, जीवन से मुक्ति हो जाती है liberation इस from प्रकार the 11 birth and death. श्रुति फल की यह So कथा in this way we have 7 दिन तक चली हरि कृष्ण का concluded आश्रय लेते हुए the कोई 11th नहीं चाहता है कि fruits. कथा समाप्त Nobody हो wants to लेकिन हम सब stop समय the के Bhagavad बंधन में Katha, हैं but we all are stuck with the पूर्ण time and हुति bound नहीं to होती time. है So we have to do इस the कथा की पूर्णाहुति Purnahuti. करें और पूर्णाहुति करते समय आप सभी भक्तों से हम निवेदन
And कि देखिए हम कोई I heartfully request you all. नहीं है, I am not a कोई professional ऐसी speaker. विद्वत्ता, ऐसी पंडिताई, ऐसा I'm ज्ञान not नहीं है। wise or हम भी आपकी intelligent. लाइन में बैठे हैं, आप ही की तरह हैं। Even I am गुरुजनों like से you जो all. सुना, जो पढ़ा लिखा, जो कुछ I'm अनुभव just किया, sharing what have heard यदि from इसमें कोई त्रुटि gurus रह गई हो, and कोई learned गड़बड़ from हो गई हो Shastras. तो आप क्षमा If there करें। is something बस मैं तो यही कहना missing चाहता or हूँ fall, कि so please forgive me. कथा में जब हरि नाम, हरि चरित्र आते हैं तो Anything वो बड़े महान है। else is immaterial. उसे सुनकर But अपने जीवन the को chanting of the धन्य holy name करना चाहिए। is आप सभी great, भक्तों ने and we should श्रीमद् try भागवत कथा to पाठ make की, our life great by सभी भक्तों को listening धन्यवाद। to Bhagavatam. ऐसे ही बने I रहिए, thank you all a प्रसन्नता lot. प्रसन्न रहिए, So please हरि भक्ति continue का आश्रय कीजिए। listening the Bhagavad Katha and take the shelter of the holy names and विशेष धन्यवाद दूंगा। मेरे make परिवार और your वसुदेव life जी कोई successful. बड़े आदमी नहीं है, And I especially want to मिडिल क्लास thank the साधारण परिवार का organizers. जीवन चलाते हैं, They are लेकिन इनकी middle जिज्ञासा को class देखकर family, कि ये but their पहले inquiry कि is जैसे great. तैसे पूरी दुनिया भागवत They सुने, worked so hard ऐसा आयोजन and करेंगे। इनका arranged दिल for this बहुत बड़ा Bhagavad है, Katha so that हृदय बहुत others बड़ा can है। hear. सो That भगवान I आपकी get कृपा overwhelmed with कृपा emotion. करें। और So विशेष I धन्यवाद दूंगा wish that the श्रीमती Lord bestow their mercy on रामवती you. जी, I उनके want to स्वामी thank Ramvati श्री Mata, her राजेश son, प्रभु, Rajesh Prabhu, सुमन माता, Suman संजय जी, Mata, सरोज जी, Sanjay ji, नरेश जी, Saroj ji, सीमा जी, Naresh ji, आप Seema ji. सभी भक्त और आर्यन, मयंक, दिव्यांश, अंशिका, नारायण हरि, प्रिया, नव्या, आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। You all heard this Katha with so much patience जिस and प्रकार love. से हरि कथा होती है, भगवत कथा When होती there है, is a और इतने Bhagavad Katha like हजार this, भक्त कथा को सुनते and हैं, so many तो इनका एक people बहुत बड़ा listen, फल निर्माण होता है। और then उस there is a फल की वजह से huge हमारे fruit that पितरों का उद्धार get होता है, manifested. इसमें कोई And संशय by नहीं। that, there is जिस no किसी doubt के that there पितरों का will उद्धार be हो चुका होता है ना, a उन्हीं के बेटे, उन्हीं के संतान deliverance भागवत of कथा the का आयोजन करते हैं। Pitrus or our इसमें ancestors. कोई संशय नहीं है। Actually, there is no doubt हमारे that मानस the ancestors who have और already been हरि delivered, प्रेमी their clan only can सीताराम जी, perform a मुरली Bhagavatam देवी, Katha. इंद्र सिंह जी, उमा देवी जी, ऐसे पावन पूर्वज, ऐसे पितरों का उद्धार हुआ, इसमें कोई संशय नहीं है। सो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। So बस I thank you भगवान all. कृपा करें, हरि I नाम में आपकी pray रुचि that बढ़े, you get the mercy of the भक्ति Lord में आपकी रुचि and बढ़े। you इसी always कामना के have साथ इस attachment and attraction दिव्य की towards the holy उपासना names से and Srimad Bhagavatam Katha. So I just conclude 333 my श्लोकों का session from पारायण करता the हूँ, Vyaspeeth of Delhi. जय जयकार के साथ। So let's end the session with Jai Jaikar. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान